गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट पेपर जूलॉजी की बात हम करेंगे और उसमें पहला टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। टैक्सोनॉमी आपने पढ़ रखी है, उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिलेबस आप लोगों के उपलब्ध होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं, वर्गीकी पदानुक्रमण की बात करते हैं। वर्गीकी पदानुक्रमण होता क्या है? सबसे पहली बात हम करते हैं, वर्गीकी क्या है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट क्लासिफाइज ऑल द लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि समस्त जीवित जगत को वर्गीकृत करती है, वर्गीकी कहलाती है। It was developed by Sweden's botanist Carolus Linnaeus. कैरोलस लिनियस ने ये डेवलप की और वो 18वीं सेंचुरी से अब तक वो सिस्टम चला आ रहा है क्लासिफिकेशन का। लिनियस ने बायोनोमियल सिस्टम इन्वेंट किया था, खोजा था, और जिसमें आगे चल के हम बायोनोमियल सिस्टम की बात भी करेंगे। लेकिन बायोनोमियल सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी जंतु का नाम, किसी भी जीव का नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो पदों में दिया जाता है। पहला पद जीनस, जिसे हम वंश कहते हैं, और दूसरा पद जाति या स्पीशीज कहलाती है। The system, binomial system of nomenclature is given each type of organism a genus and a species name. He also developed a classification system called the taxonomic hierarchy, which today have 8 ranks from general to specific. वर्गीकी पदानुक्रमण में 8 रैंक हैं जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। और ये रैंक कौन कौन सी है? डोमेन, किंगडम जैसे जगत, फाइलम जिसको संघ कहते हैं, क्लास जिसको वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश, एंड स्पीसीज जाति कहलाती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कोई भी टैक्सन की बात करते हैं, टैक्सा की बात करते हैं, तो टैक्सोन इज द सिंगुलर एंड टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड। क्या होता है इसमें? क्या होता है? इज ए ग्रुप, a taxon is a group of organisms that are classified as unit. एक इकाई है। This can be specific or general, जैसा अभी हमने 8 रैंक की बात की थी, उस all the taxa. For example, we could say that all humans are a taxon at the species level, since they are all the same species. But we could also say that human, along with all other primates, are a taxon at the order level, since they all belong to the order primates. Species and orders are both examples of taxonomic rank, which are relative levels of grouping organisms in a taxonomic hierarchy. The following is a brief description of the taxonomic rank that make up the taxonomic hierarchy. Domain. Domain is the highest, there's a most general or the wide variety range of the organism. Domain बड़ी और मोस्ट जनरल रैंक है जगत की या जीव जंतुओं। Linnaeus did invent some of the taxonomic rank, but he did not invent the domain rank. Linnaeus ने domain rank नहीं दी थी, which is relatively new.
The term domain was not used till until 1990. Over 250 years after Linnaeus developed his classification system in 1735, the three domains of life are bacteria, archaea, and eukaryota. Archaea, the single-cell organism similar to bacteria. Some archaea live in extreme environments, but other lives in mild ones. Eukaryota, or every living thing on earth that is not a bacterium or archaeon, is more closely related to the domain archaea than to bacteria. Taxonomic ranks are always capitalized, except for species. This allows pupils to differentiate between bacteria. The organism could refer to all bacteria or just to specific bacteria, and bacteria, the domain which includes all bacteria. So this is the domain. Now we are talking about the kingdom. जगत की बात हम करते हैं. Before domain was introduced, kingdom was the highest taxonomic rank. In the past, different kingdoms were Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Archaea, and Bacteria. Archaea and bacteria are sometimes grouped into one kingdom, Monera. तो 5 kingdom में यही था, Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. This one is the 5 kingdom scheme जो आप आगे चल के पढ़ेंगे. तो ये सब क्या थे? 5 जगत थे. उससे पहले की बात करें तो 2 ही जगत थे, जिसमें केवल एनिमल और प्लांट्स को शामिल करते थे. फिर बाद में 3 जगत हुए, जिसमें एनिमल हो गए, प्लांट हो गए और बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गए. इस तरह से फिर 5 जगत की प्रणाली आई, फिर आगे क्लासिफाई होते चले गए. However, some of these groupings such as Protista are not very accurate. Protista includes all eukaryotic organisms that are not animal, plant, or fungi. But some of these organisms are not very closely related to one another. There is no set agreement on the kingdom classification, and some researchers have abandoned it altogether. Currently, it continues to be revised. In 2015, researchers suggested splitting Protista into 2 new kingdoms, Protozoa and Chromista. Now, we are talking about the phylum. किंगडम के बाद में उसके दूसरी रैंक जो है फाइलम की है. एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं. फाइलम, plural phyla, is the next rank of after kingdom. It is more specific than kingdom, but less specific than class. Means class और स्पेसिफिक हो जाती है, फाइलम उससे बड़ी रैंक है और किंगडम उससे भी बड़ी रैंक है. तो एक किंगडम के अंदर बहुत से फाइलम हो सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सी क्लास हो सकती है, तो क्लास छोटी रैंक हो गई. तो there are 35 phyla in kingdom Animalia. Including chordata, all organisms with a dorsal nerve cord, porifera, and arthropod.
सभी इसके अंदर आ जाते हैं। क्लास, नेक्स्ट रैंक की बात अगर हम करते हैं तो वो क्लास, और क्लास वाज द मोस्ट जनरल रैंक प्रपोज्ड बाय लिनियस. Phyla were not introduced until the 19th century. There are 108 different classes in the kingdom Animalia, including Mammalia, mammals, aves, birds, and Reptilia, reptiles, among many others. The classes of Animalia that Linnaeus proposed are similar to the ones used today, but Linnaeus' classes of plants were based on attributes like the arrangement of flowers rather than relatedness. Today's classes of plants are different than the ones Linnaeus used, and classes are not frequently used in botany. Order, इसे गण कहते हैं, ये क्लास की छोटी रैंक हो गई और स्पेसिफिक हो गई. Order is most specific than class. Some of the Linnaeus orders are still used today, such as Lepidoptera. There are between 19 to 26 orders of Mammalia. Depending on how organisms are classified, sources differs. Some orders of Mammalia are primates, cetaceans, whales, dolphins, and porpoise. Carnivora, large carnivores, omnivores, and Chiroptera, bats. So these are the orders: cetaceans, carnivora, Chiroptera. ये सब क्या है? ऑर्डर्स हैं. ऑर्डर्स से छोटी रैंक अगर हम बात करते हैं तो फैमिली, तो देयर इज in turn most specific. Some families in the order Carnivora, for example, are Canidae, dog, wall, foxes, Felidae, cat, Mephitidae, skunk, and Oristidae, bears. There are total 12 families in the order Carnivora. तो इस तरह से फैमिली और स्पेसिफिक हो गई कि कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कितनी फैमिलीज आपको देखने को मिलती हैं? 12 फैमिलीज. अब हम बात करेंगे जीनस की, तो जीनस और स्पेसिफिक और पार्टिकुलर हो गया. जेनेरा is even more specific than family. It is the first part of the organism scientific name using in binomial system of nomenclature. The second part is the species name. An organism scientific name, an organism's scientific name is always italicized, and the genus name is capitalized, while the species name is too. While the species name is not. Genus and species are the only taxonomic ranks that are italicized. The scientific name of humans is the Homo sapiens. Homo is the genus and sapiens is the species name. All other species in the genus Homo are extinct. Some were ancestral to humans, such as Homo erectus. Others lived at the same time, were closely related and interbreed with Homo sapiens, such as Homo neanderthalensis, the Neanderthals. The species.
Species is the most specific major taxonomic rank. Species are sometimes divided into subspecies, but not all species have multiple forms that are different enough to be called subspecies. There are an estimated 8.7 billion different species of organisms on Earth, but the vast majority have yet to be discovered and categorized. While each genus name is unique, the same species name can be used for different organisms. The species name is always italicized but never capitalized. It is the only taxonomic rank that is not capitalized. In scientific articles, where the species name is used, many times it is abbreviated after the first full use by using just a first letter of the genus name along with the full species name. Homo sapiens is abbreviated to H. sapiens. तो ये टैक्सोनॉमिक रैंक थी जिनकी भी बात करते हैं हम, जो टैक्सोनॉमिक रैंक सामान्यतः क्लासिफिकेशन में काम आती है. तो द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस इज एज फॉलोज. डोमेन इज द यूकैरियोटा, kingdom is the Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo और species Sapiens. अगर टैक्सोनॉमिक रैंक की बात करते हैं तो इन्हीं रैंक के पहले और बाद भी सब और सुपर लगाकर इन रैंक को बढ़ाया जा सकता है. जैसे हम बात करें कि किंगडम, तो सब किंगडम, किंगडम, सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली. ये यहाँ पर सुपर जीनस का सब जीनस और स्पीसीज का सब स्पीसीज, ये जनरली यूज आने वाले टर्म्स हैं जो हम टैक्सोनॉमिक रैंकिंग में प्रयुक्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की. तब तक के लिए नमस्कार.